My presentation. Slides. So, good afternoon, viewers. A great pleasure in welcoming you all today from Paras Hospital, the whole family of Paras Hospitals here. And then today we're going to discuss the fourth of the series of the breast cancer Facebook Live sessions. And let me just tell you about the program that we've been having. It's a 5-day program we've been having, and the on the day one, that is on 10th of August, we had the basics of the breast cancer, basics of the breast anatomy, physiology, and prevention of the breast cancer. And then we had on the second day, that is 11th of August, we had the early detection is the key, where we discussed about how to do the self-breast examination, how to do the screening, how fast we can go for the screening, and how to, these are the points which we discussed and what are the tests involved. And on day 3, that was yesterday, we have discussed about how the breast cancer is managed, and all the treatment were discussed, and the entire thing was discussed. And today we will be talking about life besides the treatment, life besides the treatment. So while the treatment is going on, a lot of things go on in the patient. It's not just the treatment. So we're going to discuss about that. And then also tomorrow we have the interaction with our heroes and cancer survivors, that is HOSLA. So that's a NGO that we have, Hope, Fight and Win. So, and you'll be speaking to our cancer real heroes and those who have survived and who've gone through all these problems and won the whole game. So today we are having, just want to recapitulate what we have been talking about. Number one, breast cancer incidence is increasing a lot. It is number one cancer in India today, with more than 1.5 lakhs happening every year, new patients. And then this is a preventable malady. And then a lot of awareness is required and lifestyle modification is required. The breast cancer is a very much curable malignancy. It's one of the most important and curable malignancy. And provided the early diagnosis is done and prompt and adequate treatment is done. For the treatment, it's a multimodal treatment is the key, which is important, and we discussed a lot about that yesterday. And then even the advanced cancers are treatable today. We have very effective palliation and prolongation of the survival, and with the new treatment methods. And for any queries, anytime, today or even the previous episodes, please mail us to the queries at parascancercenter@gmail.com or contact the telephone number which is here. And we have all the sessions listed on the Paras Healthcare Facebook page. Kindly visit them and you will find them very easily. Right? And then today we're going to discuss about the life besides the treatment of cancer. With me are many other very nice, good speakers. Dr. Aditi Agarwal, who is the radiation oncologist with us, Dr. Mansi Chauhan, who is a surgical oncologist, and we have the other experts, Dr. Preeti, who is a senior consultant in clinical psychology. She'll be talking about various aspects of the stress management and so on. Mrs. Dimple, who's the founder of the NGO here, and then she's been herself a survivor, and she's very bold and she's been active in causing the awareness and motivating the people. And we're very fortunate, Mrs. Dimple, to have you here. And Dr. Pramila, who is a head physiotherapy department in our hospital, in Paras Hospital. Mrs. Neha, who is the chief dietitian, and she will talk to you about the diet as and when we talk about that issue. And that's the whole team that we have here. And we welcome each and every one of you. And thank you for joining us. There is some background noise coming from somewhere. Maybe others could mute their mics so that we can be talking. Dr. Neha and Dimple, may I request you to mute your mic so that there's no background noise. Thank you. Right. So today's agenda is going to be that we're going to talk about the stress management. The patients of breast cancer
while undergoing the treatment, and from the date of the diagnosis to even after that, till the date they have a stress, some kind of a stress. We'll talk about the stress, how to manage that stress, some body image management, because the breast cancer is such a cancer that the body image is disturbed for a lot of time. There's a lymphedema, there's a hair change, there's a change in the chest, the weight, the breast, the skin, and many changes are there. We'll talk about that. Physical state of your body in general, the taking care of your family. So if you're the lady of the house, you will have your own job to do, you have your own family to take care of them. So while you're taking care of yourself, somebody has to be taking care of the family. How do we do that? Important medical aspects, that is taking care of the side effects and taking care of the infection, that is another part you'll be doing. Some social aspects we'll discuss about it, and also how the work atmosphere, that these are the things which we'll be discussing. So the first and foremost thing which we'll talk about is the stress management. So stress management, the questions when come to anyone's mind is, what is this stress and when does that happen? Does it happen at the diagnosis? Does it happen at the time of treatment, or does it happen later on? What are the phases of the cancer journey when the stress is maximal? How to face that, and what kind of a stress is there? Like for example, a patient who's been treated and managed with the cancer completely, they also have a stress when they go for the test, and how does it affect the whole picture, and then how to tackle it, what are the relaxation techniques and various suggestions to each and every one of them. So I think we're very fortunate to have Mrs. Dimple here, who has undergone this particular thing. And I want to just also tell the audience and everyone else here that though I'm talking as a medical oncologist, I also claim to be a caregiver, because my wife had breast cancer a couple of years ago, and then we have gone through the whole thing. So while I was treating her as a medical oncologist through our team, I was also a caregiver at home. In the evening at home, I was a caregiver, and in the hospital, I was like a doctor. So I had two roles to perform. So I will request Dimple to share her experiences as to how she managed her experiences and the stress, and then I'll also request later Dr. Preeti Singh to answer how to manage the stress. Over to you, Dimple. Hi, very good evening. Thank you so much, Dr. Rao, for having me here. So yes, I was diagnosed with stage 3B triple negative breast cancer at the age of 32. That was the year 2030 in the month April. And stress happens at the beginning, when you receive the news that yes, you're positive for cancer. So it's not easy to handle all the things, but somewhere you have to accept that you have cancer now. And it's not only the stress of the diagnosis, it's also about the prognosis, it's also about the treatment, it's also about the stress of recurrence while you are on the treatment. And stress would happen in bits and pieces. Again, I would say that when you are going for your chemotherapy, there's a different kind of stress. There are some fears that set in, which is like hair loss, side effects of the chemotherapy, and nausea, pains, which are associated with chemotherapy. Then again, if you are able to overcome that stress, then another stress happens when you are about to go for your surgery, that your body image changes. And then again, a different kind of stress settles in. And then again, the radiation part happens where more of the pains and stiffness of the body associated with it, darkening of the skin. So there are different kinds of stress one faces during the journey. And along with the stress, there are different kinds of fears that settle in. So, and it does affect the entire journey. And I would say it also affects the outcome of the treatment. Because if you're in the state of stress, then you are not thinking rationally. You are thinking emotionally. You are thinking about the society. You are thinking about the stigmas which are there in the society. So it does affect the entire picture. And now, how you tackle it, first, I would request if anyone who's been out there watching us or would be listening to this video, watching the video,
that you have to have the acceptance of the diagnosis, that yes, you have been diagnosed with cancer. First and foremost is the acceptance. Then only you can move on to the journey. If I And may, there are various Dimple, techniques to tackle it. Yeah, so, sure, sir. did it ever bother you that why did you have it of all the people, all the women in the world? Did that question bother you all the time? Did it give you some kind of additional stress? Sir, this is a very common question, and I think everyone come across this question, why me? I think at some point of a time, it came to me as well that why me? So let me just tell you a quick thing how I tackle that question, why me, and how I overcome that stress. I lost my mother to cancer in the year 2007. So I was a caregiver as well before I became a patient. But being a caregiver, I knew nothing about cancer. I'll be very honest. I knew nothing about cancer. I could only see some part of it where my mother used to express that she's having some kind of difficulty. She's having nausea, she's having muscle cramps, she's having abdominal cramps, or she's unable to, low energy level, fatigue, and everything. But I did not experience it on my own. So I knew nothing about cancer, I would say. I would admit that. But the moment I got it, the moment I received my first chemotherapy, I was like, wow, the kind of pain, the amount of pain my mother was handling was way too much. And I could only understand maybe a bit of it. So that erased, why me question out of my life. I was like, okay, fine. This has come as a lesson to me that, I couldn't feel my mother's pain. I'm being an only child. I was very attached with her. So sorry, I'm getting emotional. So this erased everything. I was, thinking more of my mother's treatment. And that also, another question came in my mind that whenever I used to go for my chemotherapy, that there is a patient lying next to me who's also receiving his or her chemotherapy. But similarly, even their family members, their caregivers are not able to understand the amount of stress that patient is handling, whether it is emotional stress, whether it is physical, whether it is mental, whether it is psychological. So you really cannot relate with any patient unless and until you have experienced it on your own. And I guarantee it because I have seen it. And I'm very honest that I could only relate to my mother's stress was only bits and pieces. Right. So thank you, Dimple. I think now we go to Dr. Preeti. So Dr. Preeti, you have heard Dimple saying that no, she's gone through the whole journey and at different phases, she had different kinds of stress. So can you advise the listeners and the patients, kindly unmute yourself, and then, as to how to tackle this problem? Kindly unmute yourself, Dr. Preeti. You have to unmute yourself. Yeah, thank you, Dimple, for sharing and having such an honest self-disclosure with all of us here. It's definitely not easy, but nevertheless, what I would want to start off is that definitely the shock that comes with a diagnosis, the denial that begins with that diagnosis, the bargaining that follows after that, the anger that follows after that, and then comes the acceptance. There is this whole phase that we all go through once, the diagnosis comes into the picture. And this is normal. That's what I would want to say. We cannot jump this at all. And it's absolutely okay to feel overwhelmed, feel emotional, and all of that, that we talked about here. I'll just. But we have to understand that. Yeah. I'll just butt in here because yes, sir. काफी जो व्यूअर्स हैं हिंदी समझते हैं, तो काफी लोग हिंदी समझते हैं, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो बता दूं कि जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है एक बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजरते हैं वो पेशेंट, हर स्टेज पे ट्रीटमेंट के हर स्टेज पे स्ट्रेस से गुजरते हैं. तो डॉक्टर प्रीति हमें बता रही हैं, अभी हिंदी में बताएंगे कि ये स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाता है. वो डॉक्टर प्रीति प्लीज. तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमारा शुरू जब होता है, डायग्नोसिस के साथ शुरू होता है और ट्रीटमेंट जब तक चल रहा
होता है उसके बाद शुरू तक चलता है, तब तक स्ट्रेस चलता है, जब ट्रीटमेंट खत्म होता है। बट सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वाइल हमारा ट्रीटमेंट ऑन है और हमें अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज ये हम अकेले नहीं कर सकते। वी नीड अ होल टीम फॉर अस विद ऑल द एक्सपर्ट्स with whom we can trust and we can go with them for that matter. और जब तक हम वो टीम को इकट्ठा करना भी स्ट्रेसफुल हो जाता है, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट, वो टाइम हमें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, so that we have the best possible solution to a problem at that particular point of time. काफी डर रहता है उस दौरान, एंजाइटी रहती है, जैसे बताया डिम्पल ने कि रेकरेंस हो सकता है, क्या होगा मेरा आउटकम। बट एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हमने नोटिस करी है कि दो मरीज अगर सेम डायग्नोसिस और सेम स्टेज के साथ भी आते हैं, उनका प्रोग्नोसिस फर्क हो सकता है। और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि मे बी एक इंसान अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को बेटर ढंग से हैंडल कर रहा है एज कंपेयर टू द अदर पर्सन। सो इसका बहुत बड़ा रोल आता है जब हम कैंसर के साथ हैंडल कर रहे थे और भी दूसरे मेडिकल कंडीशंस को जैसे भी हम हैंडल कर रहे होते हैं। सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपने सोशल सपोर्ट को ना छोड़ें। या यू वांट टू ऐड समथिंग डिम्पल? Yeah, like you said, every breast cancer patient has a different diagnosis and different prognosis, and their journeys cannot be compared to each other because everyone's body behaves differently to the treatment. But one thing that really helps them is having a positive mindset. Absolutely. You know, like I said, acceptance is very important. Then you need to admit it. Yes, this is happening. And then you have to take appropriate action, right? But with a positive mindset, not with the fears, not with the doubts. Right. I totally agree. It's a fear of unseen, but then positive mindset and the support from your family, from your friends, from the doctors, from the holistic care experts, it really helps. Yeah, I think you said it very good point, Dimple, that the whole family, पूरी family इनको support करना चाहिए, पूरी family and patient खुद अच्छे से positive रहना चाहिए। डॉक्टर अदिति एंड डॉक्टर मानसी से मैं पूछता हूँ, डॉक्टर अदिति, आपने तो बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, कुछ नेगेटिव एटीट्यूड, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड, आप कुछ बताते हैं उसमें जब भी ट्रीटमेंट ऐसा होता है? So whenever patients have a positive attitude, actually they can accept the diagnosis as well as the treatment better. Treatment को better tolerate करते हैं वो। Side effects अगर होते भी हैं तो they understand कि हाँ हमें ये क्यों हो रहा है और हमें इससे क्या benefit होने वाला है, which makes them to deal with it, to take it in a much better way. So positive mindset does help. And then फैमिली डेफिनेटली एक अनकंडीशनल सपोर्ट होता है फैमिली का। सो टॉक टू योर फैमिली, डिस्कस एंड शेयर योर फियर्स विद देम। उन्हें बताइए कि आप क्या फील कर रहे हैं। इट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड एंड इट विल हेल्प यू टू टेक इट बेटर। Right. Okay, that's it. Dr. Preeti, please. So, as we discussed and as we know, कि हमारे phases होते हैं. Sometimes they can be discomforting. Sometimes we are little in a comfortable zone while the treatment is on, for that matter. So it is important कि हम अपने periods of normalcy जितना हम बीच-बीच में restore कर सकते हैं वो करें. अपने आप को isolate ना करें उस particular time के अंदर. और अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज किसी भी लेवल पे, व्हाटएवर लेवल, 5 मिनट 10 मिनट जो भी हम समय लगा सकते हैं, हम अपने आप को उसमें रखें, उस मोड के अंदर, फॉर दैट मैटर। कैटास्ट्रोफाइज नहीं करना चाहिए कि हम हमेशा वर्स्ट आउटकम सोचें। टेकिंग अ डे एट अ टाइम, एक दिन करके अगर हम चलेंगे और जस्ट गो बाय दैट, वी विल बी इन अ बेटर स्पेस, फॉर दैट मैटर। गूगल से दूर रहें, वहां से रिसर्च, वहां से इंफॉर्मेशन ना लें, वो बहुत जरूरी है। और सो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है पेशेंट को कहीं ना कहीं पे मदद करेंगी। साथ में रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, किसी तरह का मेडिटेशन, जिस लेवल पे भी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, कुछ भी लेवल पे एंगेज कर सकते हैं, करें। That would really help us. Thank you. I think so. Some of the stress management, तो जब ये ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो काफी स्ट्रेस होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और स्ट्रेस होती है शुरू से, डायग्नोसिस के बाद में
ट्रीटमेंट के दौरान, ट्रीटमेंट के बाद में जब ठीक होते हैं, टेस्ट के बाद जाते हैं, तब भी होता है। तो नंबर 1 ये बताया कि पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। अब बिल्कुल हमने ये सोचा कि जो भी होगा अच्छा होगा, ट्रीटमेंट के लिए रिजल्ट के बारे में होगा, जो भी होगा एक्सेप्ट करना है। आई थिंक डॉक्टर डिम्पल हैज सेड वेरी क्लियरली कि एक्सेप्ट कीजिए कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, ट्रीटमेंट होना है, और ये जो भी होना है एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा, जब भी ऐसा स्ट्रेस होता है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स इन्वॉल्व, किसी चीज में आप इंडल्ज कीजिए, चाहे वो, चाहे कोई मूवी हो, चाहे वो आपको रिलीजन हो, जो भी है आप उसमें अच्छी तरह से इंडल्ज कीजिएगा। और अनदर थिंग, जो स्ट्रेस है ना, अपने डॉक्टर्स, अपने नर्सेज, अपने पूरे टीम के साथ में बात करेंगे, अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस लेंगे, आपको ही क्लियर हो जाएगा कि यस, जब आपको हौसला मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको अपने आप स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हमेशा ये सोचिए कि अगर ये वन ट्रीटमेंट फेल हो गया, दूसरा है, दूसरा फेल हो गया तो तीसरा है, तीसरा है तो चौथा, मतलब ऐसे करके कोई ना कोई बैकअप तो होता ही होता है। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रेस को कर सकते हैं। इसमें फैमिली का, अपने स्पाउस का, इनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। इन सब में पॉजिटिविटी लाना है, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं अच्छे से, एंड ये सब करने से आपका स्ट्रेस आप काफी दूर कर सकते हैं। एंड स्टिल अगर ये नहीं होता है, प्लीज आपको हेजिटेट नहीं करें कोई साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट से बात करने के लिए। इसमें कोई ये नहीं कहे कि शर्म की बात नहीं है, अच्छी तरह से खुल करके बात कीजिएगा। प्लीज गो अहेड। Yeah. Sir, as you mentioned, you know, कि किसी clinical psychologist से या psychiatrist से बात करें, and there is no problem in that. People might think in your family, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपको क्यों किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाना है, we all are here for you. But sometimes patient has so much to express, so much to say, and they don't want to say to their family because उनको ये लगता है कि उनकी family को unnecessary botheration होगा. So it is very important that yes, they can go to an expert and they can express themselves. They can, you know, express their emotions, whatever they are feeling, whatever trauma they are going through, and they can get a good advice how to tackle it. Right. Thank you. I think that's a very good point. And then the last point is, आप अपने दूसरे जो इस सफर में जा चुके हैं पेशेंट्स, अगर इनसे बात करेंगे एंड जो NGOs हैं, सपोर्ट ग्रुप्स हैं, उनसे बात करेंगे, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये बताना है, मुझे जो है, मुझे एक्सेप्टेंस है और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, ये बहुत जरूरी है। Right, Dimple? Yes, sir. You said it rightly that you are not the only one. You're not going through it. Yes, you're not alone and you are not the only one. Absolutely. So I think that's about the stress management. We now go on next one, and that is the body management. यानी कि जब भी ट्रीटमेंट होता है, अपने शरीर में काफी चेंजेस आते हैं, चाहे बाल का हो, चाहे स्किन का हो, चाहे लॉस ऑफ बॉडी पार्ट है, वेट मैनेजमेंट, ये सब चेंज क्या होते हैं, ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है पेशेंट्स को, और उसको कैसे इसको संभाला जा सकता है। इससे भी स्ट्रेस काफी होती है, जो डिम्पल ने बताया था। डिम्पल, आप शुरू करें इस टॉपिक से कि कैसे आपने इसको किया है, क्या अपने बॉडी चेंजेस आपने फेस किए हैं। So body changes, of course, I underwent mastectomy. Mastectomy is nothing but a removal of the breast. It's like a complete removal. And I did not undergo any kind of reconstruction or breast conservation. So yes, of course, it does impact. And you know, जब आप recently surgery से बाहर निकलते हैं, थोड़े दिन आपको अपना surgical site wound देखने को भी मन नहीं करता है. And every time you see, you get emotional because it's a, you know, breast has been associated with femininity, right? So वहाँ पे आपको लगता है that there you're losing your femininity. You are less feminine now. But then slowly and gradually you overcome it because you have accepted it. Yeah, this is what it is. And then you start working on the solutions. If possible, reconstruction हो सकता है, उसके लिए जा सकते हैं. If not, then of course prosthesis available है, उसके लिए जा सकते हैं. So you know, you don't. I feel that fine, you're miserable, but it's not necessary that you have to show to the world that you are miserable. Right. Because अगर आप उस misery को show करते हैं बार बार, तो आप और miserable हो जाते हैं. You get to the worst condition. It will not help you in any way. So yes, hair loss, of course, जब कीमो के 10th 12th day पे आपका hair
लॉस होना स्टार्ट होता है, आप शावर ले रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, आपके हाथ में इतने इतने बाल आते हैं, ऑफ कोर्स you feel bad and then you're more emotional. There also comes a point when you think that what is happening, it's better not to go for anything, just be with it, just deal with it. You don't want to continue your treatment, there can be that moment as well. And of course, your skin becomes pale, it's not that glowy, your face becomes very puffy. Of course, a few patients, they experience weight gain due to steroids, due to chemotherapy drugs. Few patients, few women, they experience weight loss, darkening of the skin. So there are moments in the journey, because मुझे लगता है कि एक patient की journey would last somewhere between 8 months to 12 months to 16 months, 18 months, depending upon their diagnosis, depending upon their tumor type. उनका journey और उनका treatment protocol उस हिसाब से decide करते हैं. But बीच-बीच में moments आते हैं, treatment जैसे आप treatment में आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे आपको difficulties आती है. But then, of course, there is help available. There is support available, but yes, you have to ask for it, because even आपके spouse को या आपके बच्चों को या आपके डॉक्टर को भी पता नहीं होगा कि आपके fears क्या है, आपके doubts क्या है, या कौन सी छोटी-छोटी चीजें आपको bother कर रही है. अगर आप hair loss आपको इतना bother कर रहा है, तो उसके लिए wigs available है, scarves available है, hats और caps available है. अगर आपको आपका loss of breast bother कर रहा है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात करिए, reconstruction हो सकता है, prosthesis, because I'm sorry, I'm repeating the same thing. But yes, there is help available, support available, you just have to ask for it. Right. And it does impact the patients emotionally and psychologically. And जब तक आप बात नहीं करेंगे, कोई भी आपको support नहीं कर पाएगा. You need to ask for it. क्लियरली आउटलाइन आपने बहुत खुल करके अच्छी तरह से बताया क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और आपने कैसे टैकल किया और क्या क्या करना चाहिए. सो एक एक चीज हम लोग ले लेते हैं. बाल के बारे में, बाल कीमोथेरेपी के साथ में जाते हैं, उसका वो उससे वो टेम्परेरी है, बाद में अच्छे से बाल आपके आएंगे वापस, ये भरोसा रखिए. और कई लोगों का अपना अपना एक तरीका अपनाते हैं इसको कैसे सामना करना है. जैसे कुछ लोग अपने बाल को छोटे कराते हैं, कुछ लोग अपने बाल निकलवा लेते हैं ताकि बाल गिरे ही नहीं, मंदिर के नाम से या कोई भी नाम से, कुछ किसी भी बहाने बाल निकलवा लेंगे. यहाँ तक कि कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को मैंने ये भी देखा है, उनके हस्बैंड्स भी अपने शेव करते हैं ताकि उनका हौसला बढ़ाए. तो वो भी एक बहुत खूबसूरत मतलब पॉजिटिव थिंग है. सो हेयर का टैकल करने के लिए जैसे डॉक्टर डिम्पल ने बताया है, विग्स हैं, स्कार्फ्स हैं, बहुत कुछ आप पहन सकते हैं. यस, आपको खराब लगता है डेली, बट आप यूज्ड टू हो जाएंगे. ये भरोसा रखिए, ये बाल तो वापस आएंगे. और जो भी चेंजेस आएंगे आपके स्किन में, फेस में, जो भी है वो टेम्परेरी है. और ये टेम्परेरी, पहाड़ चढ़ते समय पहाड़ अपने चोट लगती है, पसीने आते हैं, धूप लगता है, ऐसे ही ये भी जर्नी में टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं. इन सबको ओवरकम करके एक गारंटी के साथ में जाएंगे, आप वापस वही खूबसूरत बनेंगे जितने खूबसूरत आप पहले थी, बाद में बनेंगे. आई हैव गॉन थ्रू दिस होल थिंग बिकॉज जब बाल जाते हैं एक लेडी के, कुछ लोगों को बहुत धक्का लगता है, रोती हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है. बट आई नो इट्स अ टेम्परेरी फीलिंग. उसके बाद में जब बाल अच्छे आते हैं, उनके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट आती है, पूरा दुनिया खिल जाता है. सो आई थिंक दैट्स द वे इट इज. ये सब टेम्परेरी है, इसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लें, एक एक चीज का सामना करेंगे. एंड डिम्पल ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया कि लोगों से खुल करके बात करें. आपने कैसे सामना किया, आपने क्या किया है, लोगों के बारे में आप जान लीजिएगा, उससे आपको मार्ग मिल जाएगा कि क्या क्या करना है. तो ये हो गया बॉडी इमेज चेंजेस. I think one important thing is the weight management is important. Maybe I'll ask Pramila कि ये weight management इस time में कितनी exercise ये कर सकते हैं. Pramila आप बताएंगे थोड़ा सा. Good afternoon, everybody. Thank you, sir. Sir, exercise plays a very important role while undergoing the treatment. So, regular exercises helps in mental and physical, both. So a person can undergo exercise for about 30 to 40 minutes, depending upon the type of problems he's dealing with. So it is better that he should start the exercises gradually, slowly, and then slowly he can increase his activity.
starting with brisk walking or static cycling, or maybe just be walking inside the house, because already they have a compromised immune system. So we don't want that they should have more of infection. So they should be going less into the gym and the crowded places. So they can have a static cycle at home, or they can start walking up to 30 to 40 minutes. And in those exercises, they should, there are specific exercises they should do. One, they should do lots of breathing exercises. That will help in the relaxation also, and also developing in the endurance of the person. Right. And secondly, they should do lots of stretching exercises. Right. Stretching, because they undergo radiation. So during the radiation, they have a stiffness in the joints and muscles. So when the person does a lot of stretching, they increases the blood flow and the oxygen towards the muscles. Right. So they should do regular stretching of their muscles and the joints, which helps in mobility. Right. Third thing, that they should do lots of balancing exercises. So because this one of the side effects of the radiation and chemo is loss of balance. So the chances of injury increases, or the chances of fall increases. So they should do some little kind of balancing exercises under the supervision of somebody. Whenever they are doing those exercises, they should have somebody at home, or if they are coming to the hospital, they should do with us. Right. And the fourth one they should do is aerobic exercise. Here, aerobic exercise increases the heart rate of the person. So we don't want that they should be throbbing themselves, but at least they should increase their heart rate and do a little bit of cardio exercises, so that they should feel good, because whenever they are doing exercises, there is a release of endorphins. So the feel good factor comes up. Secondly, the person's their confidence increases. Okay, I'm not dependent on anybody. I am able to do my work myself, and I'm doing my exercise. Because pre the treatment, he might be a physical athlete, he might be an athlete. And once he is on the bed undergoing the treatment, he is not doing anything. So the guilt factor comes up, and he's not doing any kind of exercise. So when he starts these exercises, he feels good about it. And the not the least, the strengthening exercises, because he's immobile from a long time. So there's a loss of muscle mass, and there's a loss of joint range of motion. So we recommend the mild resistance exercise to strengthening exercise should be done to the person, and over a period of around 30 to 40 minutes every day, maybe alternate days, maybe 3 to 5 days in a week, but they should be done. But at the same time, the person should listen to his body. Sometimes they feel low, and sometimes they are not well. So it is not necessary that when they are feeling low, they should do exercise. They can do, but the duration can be decreased, or they can skip on for that particular day. So they should start the exercises slowly, and gradually they can increase under the supervision of someone. Right. Thank you. I think that is very exhaustive kind of a thing. So आपके लिए सबके लिए important advice है कि आप अपने weight management के लिए एक तो dieting के साथ साथ, जो अभी सुनेंगे बाद में, आप exercise जितना आपसे हो सकता है ट्रीटमेंट के दौरान वो करें. वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग, और जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो भी आप कर सकते हैं वो करिएगा. अपने आप को ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना है, और भी नहीं कि बिल्कुल आराम करना है. और कभी कभी फैमिली बोलती है इनका कीमोथेरेपी चल रहा है, बीमार है, इनको रेस्ट करने दो. अगर आपकी तबीयत अच्छी है, बिल्कुल जितना आप कर सकते हैं उसका कम से कम 75-85% एक्सरसाइज कर सकते हैं. आप जितना एक्टिविटी कर सकते हैं करेंगे तो उतना ही आपको जल्दी रिकवरी होगा, आपका स्ट्रेस भी कम होगा, और आपको में एक कॉन्फिडेंस आएगा. वो दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, कि आप में अपने आप में भरोसा आएगा. ये सब होते हुए भी मैं अपने बिल्कुल फिट हूँ, मेरा बाल आ जाना तो मैं तो दौड़ के सबको दिखा दूँ. बहुत सारे पेशेंट हैं, अभी भी एथलीट्स हैं, जब खूब दौड़ते हैं, रेसेस में जाते हैं, ये सब चीजें. आई थिंक डिम्पल, आपका कोई पॉइंट था इसमें, बताएं जल्दी से. Thank you, sir. I just wanted to highlight that I also gained about 8 kilos during my treatment, during 9.5 months of treatment. So it is normal. I always tell to other patients and survivors, it's okay. Do not over stress about it, about your weight gain.
because it is nothing but the side effect of chemotherapy drugs and the steroids that has been given to you. And of course, you have been little physically inactive compared to what you were before. So do not over stress about it, but yes, manage a little bit of exercise routine if possible. If not, it's okay. Gradually and slowly, you can start once you have finished the treatment. Right. Thank you. That's a very wonderful point. So there are 2 points which I want during the treatment. Dr. Aditi, जब रेडिएशन होता है, रेडिएशन के टाइम में काफी स्किन चेंजेस आते हैं, वो लोगों को बहुत वरी करती हैं, वो कितना देर तक रहते हैं, उसके बारे में क्या वो परमानेंट कुछ रह जाता है, थोड़ा सा जल्दी से बता दें इनको कि क्या होता है इसमें. ये जो स्किन चेंजेस रेडिएशन के दौरान होते हैं, दे आर वेरी टेम्परेरी. दैट हैपन्स क्योंकि रेडिएशन बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो स्किन को भी कुछ रेडिएशन मिल रही है. जो ब्लैकनिंग होती है या फिर ड्राइनेस होती है स्किन की, ये जब तक 2nd से 3rd वीक में स्टार्ट होती है, जब तक रेडिएशन खत्म होती है तब तक इंक्रीज होती है. और एक बार रेडिएशन खत्म हो जाती है तो नॉर्मल जैसे स्किन सेल्स वापस आने लगते हैं, इट कीप्स गेटिंग रिप्लेस्ड. वो ब्लैकनेस चली जाएगी, वो ड्राइनेस चली जाएगी एंड स्किन विल कम बैक टू नॉर्मल. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि रेडिएशन के दौरान स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. उसको स्क्रैच नहीं करना है, इच नहीं करना है, एंड जस्ट कीप फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस जो आपके डॉक्टर ने बताए. इट इज वेरी टेम्परेरी, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जो स्टिफनेस डॉक्टर प्रमिला बता रहे थे, दैट इज रेडिएशन विल इफेक्ट ओनली द एरिया जहां रेडिएशन मिल रहा है. सो रेडिएशन से मोस्ट लाइकली जो शोल्डर है, अगर वहां रेडिएशन जा रहा है, सो उस जॉइंट में और सर्जरी की वजह से वहां पे स्टिफनेस आती है. सो एक्सरसाइजेज ऑफ योर आर्म आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके सर्जन, आपके रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको हमेशा एडवाइज करते हैं कि ब्रेस्ट की सर्जरी के बाद आपको करना ही होगा. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. आई थिंक बहुत अच्छी बात बताई है. रेडिएशन थेरेपी के जो भी चेंजेस हैं टेम्पररी हैं, धीरे धीरे चले जाएंगे, उस समय अपना पूरा ख्याल करें. डॉक्टर मानसी, आपके लिए एक सवाल है कि जो अभी डिम्पल ने भी बताया था, जिनकी पूरी मैस्टेक्टमी होती है, फुल ब्रेस्ट निकल जाता है, तो उनको क्या आप रिकंस्ट्रक्शन किस समय आप एडवाइस करेंगे? शुरू में करा लें, ट्रीटमेंट के दौरान में, बाद में कब करानी चाहिए? Yeah, sir. Exactly. I was raising my hand to raise this topic only. So breast cancer के treatment की जब हम बात करते हैं, तो body image में very important factor is presence of the breast. So when we are dealing with the cancer, if you are getting the breast removed, then probably that's a battle which is not fully won. So conserving the breast or taking measures so that the breast is conserved. और अगर कंजर्वेशन नहीं हो पाता है, मैस्टेक्टमी रिक्वायर्ड है, तो उसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देयर हैज बीन लॉट ऑफ स्टडीज व्हिच नाउ से दैट व्हेन अ लेडी हैज ब्रेस्ट कैंसर एंड हैज द ब्रेस्ट प्रिजर्व्ड or reconstructed, the psychological impact and the body image perception and everything changes drastically. So overall life, that is after the treatment, the life the lady would be living is very much dependent on her body image, which is indirectly dependent on her presence of breast and a normal looking breast. So basically here every lady should take a lot of time in deciding what she wants, and especially she should be a part of the decision making when it is being done. So जब ये डिसीजन लेना है कि सर्जरी में हमें क्या करना है, पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना है या कंजर्व करना है या रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो शी शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग. कि फैमिली में डिसीजन हो गया है कि मैस्टेक्टमी कर लेना चाहिए, ऐसा इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज शी हैज टू अगेन डील विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट चेंजेस इन द इमेज ऑफ अ बॉडी. थैंक यू. आई थिंक बहुत अच्छी बात बताई कि रिकंस्ट्रक्शन आप डिसाइड करके, और जब भी पहला सर्जरी होता है आप इसमें डिसीजन खुद लीजिएगा पूरे रिपरकशन समझ के, और रिकंस्ट्रक्शन के जब सवाल आता है पूरा ट्रीटमेंट के बाद में आप एक बार कंसल्ट करें. इसमें बॉडी इमेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सर्जरी के बाद में एक होता है, प्रमिला कैन टेल अबाउट दैट, एंड वो है लिम्फेडिमा, यानी कि हाथ का सूज जाना. बिकॉज सर्जरी में ब्रेस्ट के अलावा जो बगल में से लिम्फ नोड्स निकालते हैं, लिम्फ नोड निकालने के कारण वहां पर ड्रेनेज अच्छा सा नहीं होता है, और वो जो पूरा लिम्फ नोड निकालने के बाद में करीब 10 में से 30-40% लोगों को ये लिम्फेडिमा कुछ हद तक हो जाता है, एंड उनको पहले से ही प्रिवेंट करना पड़ता है. प्रिवेंटेबल है और इसको प्रिवेंट करना जरूरी है, ना कि उसके लिए वेट करें. और शुरू से डॉक्टर प्रमिला बताएंगे, उसके बाद में मानसी में भी आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आफ्टर प्रमिला.
So, sir, lymphedema is like, swelling occurs by removal of the lymph nodes during the cancer treatment. So it could be usually on the arm which has been affected. So there is a swelling, and the swelling is not that normal swelling. It is a huge swelling, and the person can feel, and it is associated with pain also. There are changes in the skin also, tightness of this area, and weakness of the affected arm. So we always tell the person and tell them that whenever there is a swelling, you need to tell us, and how to manage it, that is important. We tell them a lot of exercises for the management of lymphedema, so that swelling can be drained. One is a lot of exercises we teach them of the neck, arm, and shoulder, so that fluid can be drained. Number two, the compression garments we recommend them, so that whenever they are wearing those compression garments, it helps in drooling of that fluid. Number three, the skin care. We ask them to take care of that lymphedema skin, because that skin becomes very chippy, and it is pricky. So better we ask them to be vigilant with their skin care, because the chances of cellulitis increases, because already there is a lot of fluid protein given to to that area, and so that can be avoided. Number three, avoid a lot of any kind of trauma to that arm. Whenever they are doing some kind of needle or any kind of work which can lead to some injury, we ask them to wear gloves, and keeping the arm a little elevated and wearing the compression garments. And we have also lymphedema therapy machine. So we ask them to use it regularly, which helps in draining the fluid from proximal to distal part of the body. Thank you. So I think once you quickly आप थोड़ा बताएंगे कि ये इसके लिम्फेडेमा का आप पहले ऑपरेशन के टाइम में बताते हैं एंड प्रिवेंशन जल्द बता दें. So very rightly said by Dr. Pramila कि क्या-क्या हम modalities use कर सकते हैं once the lymphedema sets in. But it's a very important point I want to highlight here, that every patient who has undergone surgery or radiation to the armpit region, all of them should try and prevent lymphedema from setting in. So अगर हम वहीं से शुरू कर देते हैं lymphedema from the first day of surgery और first day of radiation की lymphedema set in ही नहीं हो, prevent कर सकते हैं अगर हम lymphedema को. So that is our primary aim. For that we need all the exercises and compression garments, all the precautions which is required. So if we catch that at right time, अगर reversible stage में हम उसको पकड़ लेते हैं, it's a very important thing to do that. और हर patient को it is important that they should keep this in mind, that they have to prevent lymphedema from happening, not just treating it once it has set in. Thank you. I think we have covered the whole body image and everything. बाल का, skin का, face का, everything is temporary except the lymphedema. उसको आने ही नहीं दे. Weight management अच्छा सा करें. So that's a message about the body image. अभी next वाले पे हम लोग चल जाते हैं कि इसके बारे में taking care of the family, and इस point को थोड़ा जल्दी से हम लोग करते हैं. तो एक तो आपको जब भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके घर में कोई केयर टेकर हो, बिकॉज उसके बगैर आप मैनेज नहीं कर सकते हैं. अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को या अपने अदर फैमिली मेंबर्स, उन सबको ही करना है. और दूसरा, अच्छी तरह से बातचीत कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और सजेशंस लीजिए लोगों से. अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ में हर एक से अगर आप बातचीत करते रहेंगे, आपकी हालत कैसी है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, आपको स्ट्रेस भी होता है. तो हमने भी इस समय सब फ्रेंड्स, सब रिलेटिव सभी पूछते हैं, भाई सुना है इनको ये हो गया, ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है. आई थिंक उस सब से दूर रहें. तो हमने एज ए केयर टेकर हमने क्या किया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था. मैंने अपने वाइफ को बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं किया था. मैंने सबको एक मैसेज डालता था, वो बिल्कुल ठीक है, आप उसके बारे में चिंता नहीं करें, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है. उससे सब लोग, उनको मैसेज भी मिल जाता है, उनकी स्ट्रेस भी, एंजाइटी खत्म हो जाती है, और हमें वो बॉदर भी नहीं करते हैं. सो इस तरह से कोई ना कोई करें. क्विकली मैं डिम्पल से पूछूंगा ये वाली जो चीज है उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला है. सो जल्दी से बता दें, सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. And sir, like you said, कि आपने एक ग्रुप बना दिया, उसमें मैसेज कर दिया. And I also feel at times there is no need to explain yourself. There is no need कि आपको जरूरत ही क्या है किसी को बताने की कि आप कैसा फील कर रहे हो.
Right. हालांकि मैं तो पूरे वर्ल्ड को बता देती हूँ. I Right. put up on my statuses how am I feeling, but there are few people I know, there are few women I know, they are not comfortable. You know, they think कि हम express करेंगे कि आज हमें पेन है, या आज हमारे को डायरिया हो गया है, या आज हमें रात को नींद नहीं आई, chronic constipation था, या कुछ भी है, तो हमें unnecessary का sympathy नहीं चाहिए. That's also okay if you want that. If Right. you want some space, that's also okay. And if you want to, you know, convey the message that how are you feeling, that is also okay. Yeah, right. So whichever way, Yeah. it has to be a patient's decision, Right. whichever way. Thank you. And मैं हर बारी एक चीज और बोलती हूँ काफी patients को, that if you are getting some kind of negative vibes from any of your family members, any of your friends, even from your spouse, so try to keep a distance, Very good because point. you don't want that. You Right. don't want that. You want yourself to be surrounded by positive people. Right. And मैंने कुछ पेशेंट्स को ये भी बोला है कि कई बार पेशेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं related to other things than treatment from their doctor, and doctor is not giving them right answers. Doctor जिस तरीके से उनके क्वेश्चंस को या उनकी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, कई बारी they are not happy with it. So मैं बोलती हूँ कि you know, even your doctor has to be positive. Your Right. doctor has to be supportive. Fine. So क्योंकि after all आपकी लाइफ आपके डॉक्टर के हाथ में है. थैंक यू. आई थिंक यू मेड वेरी गुड पॉइंट्स. एक तो केयर टेकर चाहिए, एंड जरूरी नहीं कि आप हर जनों को बताएं. आपको जरूरत लगता है कि काफी लोग चिंतित हैं, आपको ये अपने केयर टेकर को बता दे, वो बताते रहेंगे. आप अपने आप को कष्ट ना करें इस चीज के लिए. जरूरी नहीं कि हर एक को ये बताना है. एंड देन दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, वर्क रिलेटेड इश्यूज. कुछ लेडीज हैं जो खुद में काम करते हैं, घर का भी संभालना पड़ता है, खुद को संभालना पड़ता है, ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है, एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं. बहुत सारे लेडीज को हमने देखा है ट्रीटमेंट के दौरान में ये काफी स्ट्रेस हो जाते हैं, और उनको ऑफिस रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं. अच्छा भाई देखो, इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, ड्यूटी पे कब जाना है, टेकिंग लीव एंड ऑल दैट. मे बी डॉक्टर आदित्य, यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस. हाउ डिड यू मैनेज द वर्किंग लेडीज हु हैड ब्रेस्ट कैंसर, और उनको जैसे प्रॉब्लम था, कैसे आपने उनको संभाला है? So, sir, what we usually see is जो patients ट्रीटमेंट के दौरान एक्टिव रहते हैं, जितना अपने प्री डायग्नोसिस वाले रूटीन में इन्वॉल्व रहते हैं, they can deal with the side effects better. अगर वो अपना काम नॉर्मली करते रहेंगे, so then you don't think about it कि आपके साथ ये हो रहा है. Okay, fine, कैंसर इज देयर, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, एवरीथिंग इज इन प्लेस. साइड इफेक्ट्स अगर होंगे तो उनका साथ साथ वी विल टेक केयर ऑफ इट, लेकिन बाकी लाइफ नॉर्मली चल रही है. बट डूइंग ऑल दैट यू डोंट हैव टू स्ट्रेस योरसेल्फ. मतलब ये नहीं सोचना है कि अगर मैं इतना काम कर पा रही थी तो अब मैं इतना ही कर पा रही हूँ. आई मीन आफ्टर ऑल यूर अ ह्यूमन बीइंग, you're dealing with cancer, you're taking care of yourself, you're taking care of home, you're doing your work, you're taking care of your family, and your family is there to support you. तो अगर आप उनको बताएंगे कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, you ask for help, they will also help you. Right. So I think दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जब ऑफिस जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, इस बीमारी के बारे में बात ना करें. आपको कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, और क्योंकि आप बार बार बताते जाएं, अगर 10 लोगों को बताएंगे, आप 10 बार अपने आप को भी बता रहे हैं साथ साथ, एंड वो इम्पोर्टेंट स्ट्रेस है, और आप उससे और दुखी हो जाएंगे. बिल्कुल ना, इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करें. ऑफिस में जाएंगे, अपना ऑफिस का काम करिए जितना आपसे होता है, एंड जो जितना भी लीव मिलता है, एंड कब जाना है ऑफिस अपने डॉक्टर से अपने आप ही कर दिए. ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सकता है आप अपने आप को नौकरी में लगा लें. कुछ बॉडी चेंजेस होंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करके वो लोग भी एक्सेप्ट करेंगे. आई थिंक दैट्स अ बेस्ट मैसेज. सो डॉक्टर मानसी, यू वांट टू से एनीथिंग क्विकली, एनी पॉइंट अबाउट दिस वर्क रिलेटेड इश्यूज? So there were a few patients who were working in corporate setup and then undergoing treatment. So one of them was I would like to share a story. She was very worried about going to the office with all the short hair and hair loss and everything. But then she went to the office and then she shared her story. That as soon she was very apprehensive about how the people will react when she goes there like this, but they were very supportive of her, and they like shared gifts, and they like had a small welcome party for her, and very supportive of her in this way. So sometimes we expect like the worst which will happen to us, कि सब लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, that is the worst which will we accept, but they'll probably sympathize with me.
but the world out there is not as bad as we might expect at that point of time. So you might have support from maybe places you are not expecting. Right, thank you. I think कई बार ऑफिसेस बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं एंड देन आप खुल करके बता दें अपने सीनियर जो भी हैं उनको बताएंगे तो बाकी सबको साउंड करते हैं. हर एक से अपनी ट्रीटमेंट के बारे में ना करें. कोई आपके फ्रेंड होंगे अच्छी तरह से अपने काम करेंगे सो दैट यू ट्रीटेड नॉर्मल, यू ट्रीट योरसेल्फ एज नॉर्मल. अपने आप को नॉर्मल समझेंगे, आप बाकी लोग भी आपको नॉर्मल समझेंगे. राइट. अब दूसरा है ये जो मैं क्विकली बता देता हूँ ये वाला पॉइंट जो टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ हेल्थ. आप अपना ट्रीटमेंट तो करा ही रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ में जो साइड इफेक्ट्स होंगे अपने डॉक्टर के संपर्क करके उसको मैनेज कीजिएगा. और इन्फेक्शंस, आप एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होंगे, ट्रीटमेंट जब चल रहा होगा और उसको आप प्रिवेंशन करेंगे. इन्फेक्शन से विजिटर्स कम से कम करेंगे, कम से कम बातचीत करेंगे. बार बार ये दोहराइए मत मैं कैंसर के पेशेंट हूँ, मेरा कीमोथेरेपी चल रहा है, मेरा रेडिएशन चल रहा है, मेरा ऑपरेशन हो गया. ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है. इससे आपका स्ट्रेस बल्कि बढ़ते जाएगा. बार बार बोलते जाएंगे, आपने वो सब एक बार सुनेंगे, आप 20 बार सुनेंगे, 20 लोगों से बात करेंगे. तो ये चीज अच्छी बात नहीं है. जितना कम बात करें उतना अच्छा है. अपने साइड इफेक्ट्स एंड इन्फेक्शंस के बारे में पूरा को पूरा ध्यान दीजिएगा. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर थोड़ा सा अच्छी तरह से बात करना चाहेंगे. हमारे पास में डॉक्टर नेहा भी है. डाइटरी मैनेजमेंट, क्या खाना चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट है अलग अलग दौर से गुजरता है. कभी भूख नहीं लगती, कभी मुंह में अल्सर होते हैं, कभी उल्टी जी करता है, कुछ टेस्ट अच्छा नहीं लगता है. तो कैसे इस डाइट को मैनेज करें, और डाइट के बारे में थोड़ा सा डॉक्टर नेहा बताएंगे. अनम्यूट योरसेल्फ डॉक्टर नेहा. आप अपने आप माइक को अनम्यूट करें. माइक को अनम्यूट करें या अभी अनम्यूट करें प्लीज. Yeah, Abhi. Good afternoon, all. Yes. Okay, so I believe good nutrition is very important during cancer because cancer itself and its treatment can affect your appetite. Cancer का जब treatment शुरू होता है, it can also alter your body's ability to tolerate a nutrient and how your body use a nutrient. Cancer का जब भी treatment start होता है, तो उसका side effect nausea, vomiting, mucositis, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं. बट एट दैट टाइम ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी डाइट का ध्यान रखें, क्योंकि गुड न्यूट्रिशन हेल्प करता है हमारी बॉडी के स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने में. सबसे पहले अगर कॉन्स्टिपेशन है, कई बार कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट में फाइबर को ऐड करें. तो जितना फ्रूट एंड वेजिटेबल या स्प्राउट्स हम लेंगे, इनमें फाइबर की क्वांटिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है. हमें आई थिंक उनका थोड़ा सा वो हो गया है. सो मैं उनको बता दूं, उनका सेटिंग लाइन इज आउट, डजंट मैटर. सो जो डाइटरी मैनेजमेंट आपको ये करना है कि जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एक कॉन्स्टिपेशन होता है, अपने फाइबर यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कंटेंट थोड़ा बढ़ा लें. जब आपके मुंह में छाले होते हैं तो आप ऐसा वाला खाना कीजिए जो सॉफ्ट डाइट, जो मिर्ची वाला नहीं हो, वो ले लें. और एनर्जेटिक, उसमें थोड़ा कभी कभी का पेशेंट को मैं भी ये भी बोलता हूँ, एक जो अपना खीर बनता है, जो अपना देसी जो इंडियन स्टाइल में खीर बनता है, उसमें अच्छी तरह से नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खीर देसी घी होता है. इट्स वेरी वेरी न्यूट्रिशियस. में दाल, राइस, जो भी आप डालना चाहें, हर चीज का खीर बन सकता है, बहुत अच्छा है. उसमें अगर देसी घी डालेंगे खुशबू भी अच्छा होता है. सो ऐसी चीजें आप न्यूट्रिशनल खा सकते हैं. कोई स्पेशल डाइट नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा थिंग्स. बिकॉज अगर आपको भूख नहीं लगता है तो आप भूख लगने वाली कोई दवाई ले लीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा फोर्स कीजिएगा. उस समय अगर खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाएंगे, अच्छा सा रहता है. फ्रूट्स वेजिटेबल्स के बारे में बता ही दिया है. एंड अच्छा सा फ्लूइड्स बहुत जरूरी चाहिए. ये तो है ट्रीटमेंट के दौरान में. जो कॉम्प्लिकेशन होता है, अपने डॉक्टर से, डाइटिशियन से जरूर बात कीजिएगा. आपके टेस्ट किस तरह से हैं उस हिसाब से. कभी कभी कुछ लोगों को स्मेल्स अच्छे नहीं लगते हैं, घर में स्मेल आते ही उल्टी जैसा लगता है, कई लोग बोलते हैं. तो इस चीज को आपने मैनेज करना है. मेडिसिन ले लीजिएगा, वो स्मेल ना आने दें घर में. सो आई थिंक घर वालों को भी कोऑपरेशन बहुत जरूरी होता है. थोड़े से सुपरवाइज करना पड़ता है इनको. और जो ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है उसके बाद में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खूब सारा खाएं. एंड हेल्दी डाइट विद नॉन वेजिटेरियन कम से कम. अगर खाना भी है फिश एंड चिकन दैट वो ले सकते हैं. रेड मीट अवॉइड करें. अल्कोहल बिल्कुल नो.
and then you have to take this diet so that आपके recurrences कम होते हैं. Dietary के बारे में इतना है. मानसी, anything you want to say, Dr. Mansi and Dr. Aditi? सर बहुत कॉमनली पेशेंट्स आकर ये कहते हैं कि कीमोथेरेपी के दौरान फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कच्चा नहीं खाना है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग फाइबर, तो वो कैसे मैनेज करें? Yeah, fine. So I think that's a good question. पहले ये माना जाता था पहले कि अभी भी कई लोग प्रैक्टिस करते हैं कि उनको कच्चा नहीं खाना चाहिए. जनरली वो हम लोग रिजर्व करते हैं जिनके काउंट्स कम होते हैं बिकॉज इनके इन्फेक्शन. सो बेस्ट ये है कि पील्ड वेजिटेबल्स खा लें एंड देन क्लीन कर लें अच्छी तरह से वेजिटेबल्स. अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बिल्कुल नहीं जाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है. उनको विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ये सब चीजें नहीं मिलता है हमको. तो ये चीज जरूरी ले ले. ये अगर काउंट्स बहुत कम है, मुंह में छाले हैं, डायरिया हो रहा है, तो उस समय कुछ दिन के लिए अवॉइड करें. बट अदरवाइज जनरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते रहेंगे तो अच्छा है. हम भी पहले 10-15 साल बोलते थे कि आपने ये नहीं करना है. डोंट्स ज्यादा बोलते थे, बट आजकल डूज ज्यादा बोलते हैं कि आप पूरे जितना हो सकता है उतना नॉर्मल डाइट कीजिएगा. सो दैट्स, आई थिंक डिम्पल हैज सम पॉइंट देयर. Thank you so much for saying that, sir, that fruits or vegetables खाएं, क्योंकि I have been hearing it from so many patients कि हमारे डॉक्टर ने ये मना किया है और आप हमें खाने के लिए बोल रहे हो. So it's better to how to eat it and how to wash it. And I always advise कि आप उसको हर चीज को peel करके खाएं. Even a tomato, peel it and then eat it. And it is very important to consult a nutritionist or a dietitian because आपके जो treating oncologist हैं वो सर्जन हैं या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. सो दे नो देयर फील्ड. दे आर नॉट एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन. सो अ न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी अ पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी. ये तो कल भी हमने बात किया था कि पूरी टीम जो ब्रेस्ट कैंसर को मैनेज करते हैं उसमें से एक डाइटिशियन यानी कि न्यूट्रिशनिस्ट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. सो डॉक्टर मानसी, यू हैव सम पॉइंट. Sir, there have been a lot of questions regarding dairy products and its association with breast cancer. So इसके बारे में. So I think there is not much of a truth there. The dairy contents more than a particular quantity may be harmful because that adds to the पूरा calories आपके बदल जाते हैं. Otherwise ऐसा कोई direct correlation नहीं है. Recently एक publication भी हुआ है, I think from one of the countries outside, कि dairy products अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं उनमें कैंसर ज्यादा पाया गया है. बट आई थिंक इन मॉडरेशन डेयरी प्रोडक्ट्स आर गुड. और जब लूज मोशंस या डायरिया होता है पेशेंट को किसी भी कारण, उस समय दूध वगैरह थोड़ी दिन के लिए टेम्परेरी स्टॉप कर दें. उस समय दे कैन टेक द दही, छाछ, ये सब चीजें ले लें. अदरवाइज डेयरी प्रोडक्ट्स इन मॉडरेशन अच्छे ही हैं, खराब नहीं. तो इससे कोई कैंसर का कोई चांस नहीं बढ़ता है. एक्सेस होने से कैलोरीज बढ़ती हैं, वेट बढ़ता है, उसके कारण हो सकता है ये चीज हो. तो ये हो गया आपका डाइट के बारे में. थैंक यू. आई थिंक वील गो टू द नेक्स्ट मैनेजमेंट. इसके बारे में हमने काफी चीज बात किया है. फिजिकल मैनेजमेंट, लिम्फेडिमा के बारे में आई थिंक डॉक्टर प्रमीला ने पूरा बता दिया है. फिजिकल एक्टिविटी जितना हो सकता है उतना करना चाहिए. एक्सरसाइजेस एंड योगा के बारे में एक बता दूं, बहुत सारे पेपर्स हैं, इंटरनेशनल पेपर्स, एंड देन उसमें ये बताया गया है कि जो योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, खास करके उनकी रिकवरी अच्छी होती है, उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा बढ़ता है. तो जितना भी आपसे हो सकता है योगा, चाहे स्ट्रेच करें, चाहे प्राणायाम करें, कुछ भी करें, आई थिंक ये करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको. एंड लोगों को दो चीजों के लिए मैं कमेंट्स इनवाइट करूंगा कि मेडिटेशन, अगर मेडिटेशन जो भी करते हैं किसी भी तरह से थोड़ी देर के लिए भी मेडिटेशन, आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल. आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा एंड आई थिंक आपका हेल्थ भी, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा. गुड स्लीप इज एसेंशियल. सो आई इनवाइट दोस टू कमेंट्स फ्रॉम डॉक्टर प्रीति. मेडिटेशन एंड गुड स्लीप, यू थिंक दे आर इंपॉर्टेंट दिस ड्यूरिंग द कैंसर मैनेजमेंट हियर? Yes, sir, absolutely, I agree with that, sir, because मेडिटेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा माइंड बड़ा ओवर एक्टिवेटेड मोड में चल रहा होता है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट थॉट, थिंकिंग प्रोसेस ऑल द टाइम, एंड दैट टू विद अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स काइंड ऑफ टेकिंग चार्ज in during the treatment part for that matter. So meditation would definitely be a time to snap out, जिसकी वजह से हमारा जो nervous system है जो alert mode में रहता है, तो we can kind of take care of that parasympathetic arousal here, और उसकी वजह से हम अपनी बॉडी को एक कामर मोड में लेके आ सकते हैं, जिसकी वजह से eventually the immune system and other things can actually build up and we can fight better
with these with the cancer at that point of time. Thank you. So I think meditation help. और आपको नींद अच्छी चाहिए. नींद क्यों अच्छी चाहिए? नींद के टाइम में ही आपका जो रिपेयर चलता है बॉडी का पूरा नींद के टाइम में ही होता है. बहुत जरूरी है. अगर आपको नींद की शिकायत है अपने डॉक्टर से संपर्क करके अगर जरूरत पड़े तो बिल्कुल टैबलेट्स ले लीजिए. नींद बहुत बहुत जरूरी है. अच्छा एक्सरसाइज जितना भी करेंगे तो उससे या डॉक्टर प्रीति. Yeah, one more thing sir, नींद इसलिए भी जरूरी होगी क्योंकि नींद has a very strong deterrent to the mood. और अगर हमारा मूड इरिटेबल है और अच्छे उसमें नहीं है तो फिर हमारा सारा एटीट्यूड और अप्रोच चीजों के लिए बदल जाता है. So I guess दोनों चीजें, नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट. द स्लीप शुड बी टेकन केयर ऑफ. So, ये सब हो गया आपका फिजिकल मैनेजमेंट के बारे में. अभी नेक्स्ट थोड़े से बात करेंगे कि सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में. विजिटर्स के बारे में हम बता चुके हैं कि विजिटर्स जितने कम होंगे उतना कम अच्छा है. टॉकिंग टू ऑल मतलब जो सब लोगों से बात करना वो कम से कम हो. एंड आई थिंक डिम्पल हैड सेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू में कि अब दूसरे पेशेंट्स कंपेयर ना करें. इसके बारे में थोड़ा आई थिंक आई विल इनवाइट डॉक्टर आदित्य एंड डॉक्टर मानसी. पेशेंट्स आके बोलते हैं उनको ऐसा हुआ था, आपने ऐसा में किया है. डॉक्टर आदित्य. Yeah, sir. So many patients would say that almost हर पेशेंट के पास कोई ना कोई रिलेटिव या कोई नेबर ऐसा होता है जो एडवाइस देता है कि हमारे परिवार में किसी को ऐसा हुआ था और उसको तो ऐसे किया, आपको ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपको गलत कर रहे हैं, इससे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा. सो आई वुड वांट टू से कि हर पेशेंट डिफरेंट होता है, हर डिजीज डिफरेंट होता है, डायग्नोसिस कई बार डिफरेंट होता है. अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर के भी अलग अलग सब टाइप्स होते हैं, उनकी स्टेज अलग हो सकती है. किसी को कीमोथेरेपी पहले चाहिए, किसी को बाद में चाहिए, किसी को रेडिएशन चाहिए, किसी को रेडिएशन नहीं चाहिए. तो हम किन्हीं भी दो पेशेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते. फॉर दैट मैटर अगर 2 स्टेज 2 के पेशेंट्स हैं वो भी एक जैसे नहीं होंगे. किसी को कीमोथेरेपी टॉलरेट हुआ, किसी को वो कीमोथेरेपी नहीं टॉलरेट किया तो उसके डॉक्टर ने कीमोथेरेपी चेंज किया. तो प्लीज आपको कंपैरिजन मत करिए कि किसी के साथ क्या हुआ. हैव ट्रस्ट इन योर डॉक्टर, टॉक टू योर डॉक्टर, टॉक टू योर फैमिली एंड गूगल मत करिए. डॉक्टर गूगल इज नॉट द रियल डॉक्टर. ओके, थैंक यू. डॉक्टर मानसी, क्विकली एनी पॉइंट? तो सर बेसिकली आज के जमाने में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए कहीं किसी भी चीज के लिए इट्स वेरी इजीली अवेलेबल. यू कैन हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग. But in this case particularly when you should actually trust your treating doctor और वो जो आपको बता रहे हैं that information is the most valuable information. So you should trust them and listen to that information rather than information from relatives, other patients, Google, anywhere else. थैंक यू वेरी मच. एंड एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ, सोशल स्टिग्मास, यानी कि इनके घर में कैंसर है, एक सोशल स्टिग्मा है, इनके घर में मत जाइए, कैंसर आपको लग जाएगा. और कभी कभी ये भी होता है, कई बार पेशेंट्स जो आते हैं उनके हस्बैंड्स अंदर आते हैं, क्या मैं इनके साथ में सो सकता हूँ, क्या इनके साथ में हम लोग खाना खा सकते हैं. ये स्टिग्मास अपने मन से हटा दीजिए. ये जो बीमारी आप में हुआ है किसी और को, आपके फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी और को नहीं आएगा. ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है जैसे कोरोना के जैसे एक दूसरे से एक फैलता है, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. और अगर एक फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, इन्होंने ना कोई गलत किया है, ना कोई ऐसी बीमारी है जो नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको हुआ है, वो अपना सामना कर रहे हैं. तो उनको कोई स्टिग्मा या नेगेटिव पॉइंट ना दे. और किसी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उनसे शादी नहीं करना, ये सब चीजें बिल्कुल आज के दिन में कोई उसका महत्व नहीं है. सो ये इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बताना था. अभी नेक्स्ट पॉइंट आएंगे कुछ और, ये कुछ लास्ट मोमेंट में ये हम लोग बात करेंगे, एक फर्टिलिटी इश्यूज. डॉक्टर मानसी क्विकली बताएंगे फर्टिलिटी इश्यूज क्या क्या होते हैं, किस तरह से इसका सामना किया जाए. So sir, as we all know, abhi India mein we have lot of young patients who are being diagnosed as compared to the Western countries. We have more younger females who are getting positive of breast cancer. So isme fertility issue is very important, which should be addressed. So those who may be unmarried females or those who have not completed their families, so they can take a proper consultation. Ovum preservation ho sakta hai and all these things, because once the treatment starts, there might be a period of sterility. How it is resumed, and there might be hormone positive. There might be a consultation which says that you should remove both the ovaries. So there are a lot of aspects attached to it. So you should definitely consult it and address it at time before starting the treatment. Right. I think that's a very important. Young woman जब भी इनको होता है, जिनकी शादी नई हुई है, बच्चे नहीं हुए, बच्चा आगे जाके करना है, अच्छी तरह से जल्दबाजी ना करके डॉक्टर से बात कीजिएगा आगे क्या होने वाला है, ताकि ये अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं. So one important thing is that they should not try to conceive while on treatment.
कीमोथेरेपी के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, रेडिएशन भी जब मिलता है तो उसके अगर आप कंसीव करते हो तो बच्चे पे इफेक्ट हो सकता है. सो प्लीज बिफोर कंसीविंग टॉक टू योर डॉक्टर. Absolutely. I think they should take the precautions. They should talk to the doctor. अच्छे तरह से खुल करके बात करें कि कैसे precautions लेने हैं. I think that's a very important. Thank you, Dr. Aditi. So next है research by patient. So Dr. मानसी ने बताया था कि बहुत लोग Google में research करते हैं. एक चीज बताएं, जो आपको डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, बहुत सालों के बाद में बहुत मेहनत, एक तरह से तपस्या होती है, जब जाके डॉक्टर बने, स्पेशलिस्ट बने, सुपर स्पेशलिस्ट बने, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी कुछ सीखा है, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे जर्नल्स पढ़ने के बाद में ये उनको वर्किंग नॉलेज आया है. इतना आसानी से आप एक दिन में, 2 दिन में आप गूगल में पढ़ करके नहीं कर सकते. यस, आप ये बिल्कुल बता सकते हैं कल गूगल में ये नया दवाई के बारे में आए, उसके बारे में बिल्कुल आप अच्छी तरह से रिसर्च करें, बट आप ये नहीं समझे कि आप बहुत सारे नॉलेज आएंगे. रिसर्च बिल्कुल कीजिएगा, अच्छा से रिसर्च कीजिएगा. डॉक्टर से आप बिल्कुल, कई बार पेशेंट्स आके हमें नई नई चीजें बताते हैं. मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमें जानकारी नहीं थी, हाँ वो अच्छी तरह से इन डेप्थ में जाके करते हैं. अच्छी तरह से प्रॉपर्ली करेंगे तो बहुत अच्छी बात है. दूसरे सजेशंस बाकी लोगों के, कोई हमारे नीस है जो न्यूयॉर्क में रहती है, उन्होंने ऐसा बताया, लेटेस्ट हुआ है. आप यकीन मानिए, जो भी ट्रीटमेंट आपका इंडिया में चल रहा है वो उतना ही अच्छा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है. आपकी गाड़ियां जैसे आती हैं, BMW आता है, ऑडी आता है, मर्सिडीज आता है, बहुत सारे गाड़ियां आते हैं, जो बाहर बिकती हैं वही गाड़ी यहाँ आती है. यस, आपके हाईवेज ऐसे नहीं है जो वहां पर है, उतना ही फर्क है. बट आपको हर चीज, उनकी सर्विसिंग के लिए आपको यूएस, जर्मनी या यूके में नहीं जाना पड़ता है, सर्विसिंग यही होती है. उसी तरह से ये जो गाइडलाइंस है, जो ट्रीटमेंट होता है, इक्विपमेंट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, और स्टेज बाय स्टेज स्टैंडर्ड उतना ही रिजल्ट अच्छा होता है. तो ये सजेशंस आप बिल्कुल बताएं, बट यकीन मानिए अपने टीम पे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रहिए जहां पे भी आपका ट्रीटमेंट हो रहा है. फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में, कई लोगों को फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है, ट्रीटमेंट कॉस्टली पड़ता है, उनके लिए कुछ एडवाइजेस हैं. PM रिलीफ फंड है, CM रिलीफ फंड है, NGOs है, इंडियन कैंसर सोसाइटी है, ऐसे करके, और कैंसर सहयोग है, और ऐसे करके कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट काफी वो हैं. कैन किड्स हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों को आजकल ट्रीटमेंट के लिए अपना खर्चा नहीं करना पड़ता है. जिनको जरूरत है वो, उनको पूरी मदद मिल जाती है, क्योंकि बच्चों के कैंसर बहुत सारे क्योरेबल हैं. तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए बहुत सारे हैं. आप अपने डॉक्टर से, ये NGO से बात करेंगे, आपको मिल जाएगा. एक वर्ड मिस डिम्पल ने बताया था, एम्पावर योरसेल्फ. आई थिंक आई विल इनवाइट हर अबाउट दिस एम्पावर. आई रियली लाइक, आपने जिस तरह से आपने कहा है, अपने आप को एम्पावर कीजिएगा. आई रियली लाइक दैट थिंग. सो काइंडली डिम्पल, प्लीज एलॉबरेट ऑन दैट, व्हाट यू मेंट बाय दैट एम्पावर योरसेल्फ. सर, बाय एम्पावरमेंट आई मेंट कि हम, अगर जैसे अभी गूगल सर्च की बात हो रही थी, या किसी भी चीज की बात हो रही थी, या किसी ने कुछ कहा, ठीक है, फाइन, आप सबके सजेशंस को वेलकम करें, बट जरूरी नहीं है वो सजेशंस को आप अप्लाई करें. आपने गूगल सर्च पे कुछ क्वेश्चंस डाले, आपको आंसर मिले, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू अप्लाई ऑन इट योन. आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट यस, आप अपनी रिसर्च करें, आप लोगों के सजेशंस को वेलकम करें. उसके बाद आप हॉस्पिटल जब भी जाते हैं अपनी विजिट के लिए, अपने ट्रीटमेंट डे के लिए, आप अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं. हो सकता है उसमें से आउट ऑफ 100 maybe 2 things that are actually making some sense, that may help you. So you need to explore, you need to empower yourself, you need to talk to your doctors and welcome the suggestions. There is no harm, but don't apply it blindly. Right. Okay, बिना सोचे समझे, बिना लॉजिक ऐड किए आप कुछ भी ब्लाइंडली अपने ऊपर नहीं अप्लाई करें. और कई बार सर ये भी होता है कि कुछ पेशेंट की फैमिलीज उनको फोर्स करती हैं सर्टेन मेजर्स लेने के लिए, जैसे कि काउ यूरिन की बात करते हैं. कुछ फैमिलीज उनको प्रेशराइज करती है, आप ये काउ यूरिन पीना है आपको. अब उसका साइंस नहीं पता है, बट वो पेशेंट के लिए मुश्किल है, बट पेशेंट को पीना पड़ रहा है बिकॉज फैमिली प्रेशराइज कर रही है. So it's better to talk to the doctor, get the science behind it, and then only apply it. Right. And yes, of course, financial aspects की बात हो रही थी. I would also suggest कि people who are cancer free, जिनकी अभी तक कुछ नहीं है, but I would suggest that now we are seeing breast cancer diagnosis in younger women. It's always advisable to go for some kind of insurance beforehand. Very good. ऐसा नहीं है कि कैंसर किसी को नहीं हो सकता and you are not prone to it. आप कैंसर प्रूफ हो, so it can happen to anyone at any age.
So please get some kind of health insurance or medical insurance as a family cover or something. Excellent point. Because cancer treatments are expensive. Right. Very good. And कई बार help आने में देर भी हो जाती है सर, अगर कोई support आने में देर हो जाती है. हम लोग सब गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते ही दिन पहला दिन इंश्योरेंस यस भी निकाल के नहीं लेके जाते हैं. आप एक बीबी अपनी लाइफ के लिए लेते हैं, उनका पहला दिन आप इंश्योरेंस कराए, जिस दिन शादी करते हैं उनका इंश्योरेंस नहीं कराए, उतना ही उससे ज्यादा रिस्पेक्ट, वो तो लिविंग है, आपके साथ में लाइफ लॉन्ग रहेंगे. And then उनका छोटे अमाउंट की करा ले, and then slowly and gradually as you proceed further आप अपना अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं. And one thing, yes, empower yourself, sir. Like our goal is to empower you, give you all the means and sources to give a tough fight to breast cancer so that you can come out of it as a warrior. Right. Our goal is not to create any fears or doubts. We all are here to support you, to guide you in every step of your life. Right. So thank you, Dimple. I think that's a very wonderful and powerful statement. Empower yourself. एक चीज और बता दूं, जब भी किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, अपने आप को एक विक्टिम नहीं समझे. इसमें आपको कोई गलती नहीं है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है. अगर आप में जीन्स आई हैं, वो किसी कारण आए हैं, आपको कोई कंट्रोल नहीं है. आप ये सो एंड सो नाम है आपका, इस तरह से आप हैं, आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, आपको क्यों हुआ है इसका कोई जवाब नहीं है. कोई आपकी गलती नहीं है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है. आप अपने आप को नॉलेज लीजिएगा, अच्छी तरह से अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, अपने आप को बोल्ड कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, अच्छे से डाइट जो भी आपको सजेशन बताए उससे आप में शक्ति आएगी. अपने आप को कमजोर नहीं समझे. जब ब्रेस्ट कैंसर हो, हाय राम मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, नहीं, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया कोई बात नहीं, मैं उससे अच्छा से झगड़ा करूंगी, उससे अच्छा से फाइट करूंगी, उससे ये आप में होना शक्ति होना चाहिए. अपने आप में शक्ति लाइए, वो है एम्पावर योरसेल्फ. और हर चीज से अपने आप में पावर लीजिए, ना कि अपने कोई वीकनेस दिखाए. अभी अंत में एक एक मैंने हर एक एक्सपर्ट से मैं इनसे कमेंट्स लूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर आदिति. सो जस्ट अ क्विक एडवाइस, लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे, जाते समय बताएंगे प्लीज. So I would just want to say that please have confidence in yourself, talk to your family, trust your doctor and ask for help. Only when you ask for help, asking for help is not a sign of weakness. It is actually a sign of strength that you want to fight for it, and that is why you're asking for help. Right. Thank you. Dr. Mansi? So sir, basically in the complete discussion, what we understood today was that cancer treatment impacts your body and it impacts your mind. So it has impact on your body as well as your mind, to the extent that kuch patients say like a phoenix experience batata hai, that we were like to the ashes and then we grew from it. So itna major transition jo aapke life mein ho raha hai, you should never feel that you are alone. And borrowing the statements from Dimple, we are here, all of us are here to empower you. We are standing here as a team. We are all together in this. And also taking it further, when you have actually overcome this like her, and now you are a warrior, a fighter, then empower others around you because they might also need you. Right. Thank you. Dr. Preeti, something for the viewers? Yes, sir. So first thing which I would like to highlight, we know that breast cancer has the best prognosis of all the cancers. The outcome is always going to be very positive. What we really need to understand that we have 4 pillars here: the treating team, the patient herself, the caregivers, and the support group. And I think we need to be working together to get the best out of the whole challenge for that matter. And we can beat the stress together for sure. Thank you. And then any last comments? Yes, sir. So last thing I would like to say to all the women and to their family, their caretakers, that there is no shame of breast cancer diagnosis. Take charge of your life, be bold, and be beautiful. Very good, very good. And if there's anything I can do, you can feel free to reach out to me. I think you are an example to be followed, Dimple. I mean, you've gone through it. Be bold, बोला आपके इतने अच्छे खूबसूरत बाल हैं अभी आज के दिन एक टाइम में थी listening. I think that's wonderful. Very, very good. Pramila, anything from you? Sooner a person takes a help, it is better he or she will be managed in a better way. Yeah, fine. Thank you.
थैंक यू नेहा, बीच में आपको हम लोग खो गए थे, अब Sir, वापस I lost my connection. Yeah. नो प्रॉब्लम। अभी आप बता दें, आपके हमने कवर कर लिया था डायरेक्ट, आप बताएं कि लास्ट एडवाइस दैट यू लाइक टू गिव टू द व्यूअर्स। But I would like to suggest maintain your ideal body weight, not to be underweight, not to be overweight. Everyday physical activity of 30 to 40 minutes is very important. Include fruit, vegetable, and whole grains in the diet as they provide you antioxidant and fiber. And say no to red meat. And one thing I would like to say, when a patient or a person asks me what kind of meat or fish should I eat, can I have baked meat or grilled fish, because they are not oily, so that they can have it. मुझे लगता है वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, because they do more harm than good. because जो हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा हीट जो ग्रिल पर आती है, वो कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस करती है, HCA हाइड्रोसाइक्लिक अमाइंस, तो वहां से कार्सिनोजेंस ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं. Instead you can have normal fish rather than barbecuing or grilled. वो वाला जो उसका वर्जन है वो अवॉइड करें. No alcohol, no smoking, and a healthy life and positive attitude. Right. Thank you. I think you've all given. I really like that. Yeah, be bold, be bold, and then fight it out. I think lovely statement, Chesney. Yeah, so this is like the statement of the today's session, sir. Be bold, be bold, and be brave, right? Absolutely, that's very good. So अभी हम लोग अभी प्रोग्राम में अंत आए हैं. कंक्लूजन दिस, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिएगा. ये मत सोचिए कि क्यों हो रहा है. थिंक अपने आगे मैंने करना क्या है, तो इसको विन करना. दैट इज द बेस्ट वे टू डू. Manage your health, manage your treatment, do exercise, do sleep, have healthy diet, manage your people अच्छी तरह से, and manage your thoughts. Put positive thoughts in your mind, positive things in your mind, and that's the best way to win this particular war. And आपके मन में कोई भी सवाल है अभी भी, या आपके बाद में आते हैं, ये queries.parascancercenter@gmail.com में है. नंबर यहाँ दिया हुआ है. हमारे पारस हेल्थ केयर फेसबुक पेज में पूरी सेशंस हर एक पुरानी भी हैं, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं. एंड फिर भी कोई भी सवाल आपके मन में है, बिल्कुल आप हमें लिखिएगा. हमें बहुत खुशी होगी आपको जवाब देने के लिए. और कल हमारा सेशन भी होगा, और जिसमें हौसला होगा. एंड आप सबको थैंक यू वेरी मच, एंड नमस्कार फ्रॉम पारस हॉस्पिटल एंड पारस ग्रुप ऑफ Paras Family Group, and thank you very much, and thank you Dr. Aditi, Neha, Pramila, Dimple and Mansi. I think आप सबने बहुत अच्छा सा viewers के लिए बताया. Thank you very much, and all right, see you there. Right, thank you. Bye bye.